न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदायज्ञम् अहं भोजनं न भोजनं नैव भोज्यम् न कृतं सदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्. Om Shri Sai Ram. I offer my humble salutations at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. Esteemed elders, dear sisters and brothers, a loving Sai Ram to each one of you. We, the Shri Satya Sai Young Messengers, have come from the length and breadth of the country to celebrate the advent of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's 95 years of pure love and grace. To mark this joyous occasion, we offer a 3-day festival at His divine lotus feet. Bhagwan Shri Satya Sai Baba has been the charioteer of our lives, and for this seraphic grace, we offer our deepest gratitude for being born in an era when the Lord walked the earth amongst us, for the great fortune He bestowed on us by drawing all of us into His fold, and for being guided to play a role in His divine plan, all for our own betterment and transformation. Both heaven and earth fraternize in the hallowed alchemy of such a creation and the divine birth of such an extraordinary being. Swami, we, the Sai Young Messengers, and on behalf of all the devotees and Balvika's children, wish you a very happy 95th birthday. The theme chosen for this celebration is Ashtapushpam, flower offering of the 8 ideal qualities of a devotee. Out of the 8 flowers, 2 flowers, that is Ahimsa and Tapas, will be offered as the theme for today's presentation by the West Zone, which includes the states of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Mumbai Metro region and Goa. Bhagwan Shri Satya Sai Baba, the world teacher, has revealed the significance of Ahimsa as the most meritorious deed and Tapas as the highest fortitude. The culture of India stands tall and respectable to this day because of the strong foundation laid down by the Vedas. In a modest attempt to be a part of His divine mission, the Sai Young Messengers from Goa will now offer their humble endeavor at the divine lotus feet of our beloved Master. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पति
शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 अथ पुरुषो वै नारायणो कामयतः प्रजा सृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावापृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः पूर्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् निश्चलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पोषं गौपत्यम् ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वामुच्यते योगे जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणम् कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माद्यं दिनमादित्याभिमुखो दीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते
सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुषमाणा न आगात् द्विष्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदते सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधाम इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो व्राजो ददातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा आन्यर्य इळस्पदे समिद्यसे स नो वसून्याभर सङ्गच्छध्वंसं वदध्वंसं वो मना आंसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा आजुहोमि समाने व आकूते समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shri Sai Ram. After this divine chanting, dearest Swami, the young messengers of Maharashtra, on the behalf of all, with hearts filled with love, through this rendition, assure you that we shall carry forward your mission and your message to the best of our ability. Make us, O Lord, the best instruments in your hand and bless us to attain self-realization. Jai Sai Ram. Hearts are full, our hearts are full, hearts are full with your love, my Sai. Love you, Lord, we love you, Lord, love you, Lord, with all our heart. We shall carry forward your mission, Sai. We shall carry forward your message. We shall carry forward your mission, Sai. We shall carry forward your message. The message of love, the message of peace,
young messengers of West Zone have made a sankalpa, a resolve, as a part of our tapas, which we would like to offer at Swami's divine lotus feet with love. Om Shri Sai Ram. Dearest Swami, we, the young messengers of the West Zone of India, which includes Maharashtra, Mumbai Metro, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan, have made a sankalpam of daily recitation of the Ashtottar Shatanamavali, followed by reading one chapter of Sri Sathya Sai Kalpadrum based on it. We offer this at your divine lotus feet. Dearest Swami, please ensure unperturbed completion of this tapas, and may the collective fruits generated from the same be of aid to spread wellness and happiness of samasta loka. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा का कथन है कि भाव, राग एवं ताल संगीत के सबसे अहम संगठक अंग हैं और भाव, राग एवं ताल का निपुण सम्मिश्रण भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में संगीत एवं भक्ति को अविभाज्य बनाता है। प्रिय भगवान के इसी संदेश को प्रदर्शित करेंगे हमारे अगले प्रस्तुति, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा एवं मुंबई मेट्रो क्षेत्र के साई युवा अपनी अपनी आंचलिक भाषाओं में भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की युवा बहनें नर्मदाष्टकम को प्रस्तुत करेंगी। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित नर्मदाष्टकम को उस माता नर्मदा की स्तुति में गाया जाता है जिन्होंने तपस्या में लीन अनेक ऋषियों, मुनियों एवं साधकों को उनके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अनुग्रहित किया है। ध्यानस्थ अवस्था में भगवान शिव से नदी के रूप में उत्पन्न हुई माता नर्मदा मुख्यतः मध्य प्रदेश की भूमि को अपने स्पर्श से धन्य करती है और इस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं को अपने प्रेम प्रवाह से आनंदित करती है। ऐसी जीवनदायिनी माता नर्मदा को नमस्कार करते हुए मध्य प्रदेश की तपोभूमि से युवा बहनें नर्मदाष्टकम की प्रस्तुति प्रिय भगवान के चरणों में अर्पित करती है। जय साई राम। सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्ग भृङ्गरञ्जितं विशत्सु पापजात जात कारिवारि संयुतं कृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि वर्मते त्वदीय पाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सम्प्रदायकं कलौ बलौघभारहार सर्वतीर्थनायकं सुमच्च कच्च नक्र चक्र वाक्चक्र शर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।
गभीरनीरपूरपादधूतभूतलं ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहर्षदि त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा भूकण्डसूनशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्यलक्ष्यकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरधीरधीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमानि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदे कृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदे रविन्तुरन्ति देवदेवराजकर्मशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सारसायुधं ततत्सुजीव जन्तु तन्तु भक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातु सूतवाटवेषु पण्डिते शठे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देहदुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरान् वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानरान् वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानरान् वै विलोकयन्ति रौरवम्। Now, we, the Sai Young Messengers from the state of Gujarat, offer a devotional song. This song expresses the tapas in the form of Namasmarana, which is the best way to cross the turbulent ocean of this worldly life. Our beloved Bhagwan Baba says, Ramanama Smaranam Kali Yuga Sadhanam. Such sentiments are expressed in this devotional song presented by Gujarat and composed by Narsi Mehta and Gyani Baba.
the divine lotus feet of our ever-loving Master, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, and my loving Sai Ram to all. Radiant, heroic, astonishing, and natural. That's a gist of a colorful and religious Rajasthan. Swami, we express our heartfelt offering from the Sai Young Messengers of Rajasthan, a euphonious musical offering. तुम जीवन हो हमारे, प्राण हो, तुम शक्ति हो हमारी, विश्राम हो. शक्ति हो हमारी
हो हमारी प्राण हो, तुम शक्ति हो हमारी विश्राम हो। Now, we, the Sri Satya Sai Young Messengers from the state of Goa, offer a musical program entitled Damodara Re Damodara. Lord Damodar is our Goan Daivat. The Bhaktas are requesting Lord Damodar to reside in their hearts, to enlighten with his blessing, pull them out from the ocean of sorrows, feed them with honey of your devotion. Bless the Bhaktas with your divine grace. Anybody who surrenders at your divine lotus feet, you rush to help the devotees. O Saishwara, O Damodara, we offer this song at thy divine lotus feet. Jai Sai Ram. नमस्कार करता तुका, नमस्कार करता
young messengers of Mumbai metro region offer an abhang. An abhang is a devotional poem sung in the praise of Lord Panduranga at Pandharpur. Today's abhang is by the great saint Sant Namdev. For Sant Namdev, Lord Vithala was a friend, a sakha. He sang, Lord Vithala, who stands on the brick, is my God, my friend, my sakha. Vithelvari Ubahari, Maza Deva Sakha Panduranga. सखा देवा पांडुरंगा माझा देवा सखा पांडुरंगा ओ विटेवरी उभा हरी सखा देवा पांडुरंगा माझा देवा सखा पांडुरंगा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी 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 विठ्ठल जय
विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल पांडुरंग 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 Jesus said, faith can move mountains, and Swami has shown how. Bhagwan Sri Satya Sai Baba has demonstrated beyond the shadow of doubts that given selfless service and love combined with firm faith, there is nothing one cannot achieve in any area of human endeavor. Let us have an overview of the perennial activities under the auspice of the three pillars of the mission, that is education, service and spiritual. Om Sri Sai Ram. Engage yourself in service activity. Consider social service as service to God. This is the best way to earn God's love. Love all and serve all. Your entire life will be sanctified thereby. These are your sweet words, O Lord. The pandemic had brought great difficulty on the humankind, but this did not break the spirit of your Sai Sevaks, Swami. We, the Sri Satya Sai Young Messengers of the West Zone, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mumbai Metro Region and Goa, present before you the Seva activities partaken this year. Sai Ram.
All service should be regarded as an offering to God, and every opportunity to serve should be welcomed as a gift from God. When service is done in this spirit, it will lead to self-realization. O Sai Ma, guide us to this divine journey. Bless us to be on the path that leads to you. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. The modern life and living of man is riddled with doubts and fears. But we, the Sai youth and devotees, are extremely fortunate to have our Almighty Sai as the eternal guide and philosopher in this journey of life. And now, we present a glimpse of such a guidance by our beloved Bhagwan himself in this next part of the program titled Inner View, Quest with Divinity. Sai Ram. Swami, how can we change ourselves to be on spiritual path? So it's not enough if human beings change, their minds should transform. Minds should transform. When minds are transformed, and men will change. So all the lectures, discourses are not for human beings, in their minds. So you should not merely listen as a human being. You should listen with your mind. If they reach your mind, then you will change. If they reach you, the body, you will never change. So any good thing should reach the mind. Some listen with one ear and then leave it to the other ear. Some listen, they start repeating and telling others. There's no use out of these two. Swami, why do devotees experience more suffering, dukkha? There are many men of history వారు in this నాటి world. మొదలు నేటి వరకు కూడాను దుఃఖమును మాత్రమే ఆశిస్తూ వచ్చారు. We find their lives full of sadness then and now. దుఃఖములో ఉండినటువంటి ఆనందం సుఖంలో మనకు లభించదు. The happiness that you find in misery is not noticed. సుఖమునందు వచ్చినటువంటి యొక్క ఆనందము క్షణభంగురమైనటువంటిది. And the happiness that you experience is momentary. దుఃఖము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఆనందం మనకు శాశ్వతమైనటువంటిది. Out of the pain and difficulties, ultimately you experience bliss which remains permanent. కనుకనే భగవంతుడు సుఖ దుఃఖములు రెండింటినీ కూడాను అందిస్తూ వచ్చాడు. For that reason God has created both pleasure and pain. Swami, what is the real form and meaning of ahimsa? What is this ahimsa? ఇది ఎవరినైనా కొట్టకూడదు, తిట్టకూడదు, హింసించకూడదు, ఇది అహింస అనుకుంటున్నాం. Some people say that you should not beat somebody or strike somebody. ఇంకొన్ని బాధించడం హింస అనుకుంటున్నాం. You should not speak in a aggressive way. కాదు. That is not ahimsa. మన ఫ్యాక్టరీ నుంచి పోయేటువంటి పొల్యూషన్ వాటర్, The pollutants and effluents from our factory, that is ahimsa. ఇవన్నీ ఒక నదికో లేకపోతే ఒక ట్యాంక్కో చేర్చకుండా దానికి ప్రత్యేకమైన ఒక బందోబస్తు చేయండి, ఇది అహింస. You must treat these effluents to prevent pollution of the lake and the river. పబ్లిక్ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క బాధలు కలగకుండా చూసుకోవాలి. We should not create any troubles for the public. ఈ వాటర్ పోయి అక్కడ చేరటం చేత అనేక మంది జబ్బులు రావచ్చు. If this effluent polluted goes and spoils the lake, so many people suffer. అరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఇది నీవు అహింసలో భాగం. You must control your effluents and treat them properly. ఈ విధంగా మన వ్యాపారం అందుకొని ఎన్నో రకమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించి మన దేశానికి, సమాజానికి, ప్రజలకు ఎంతో మనం ఉన్నత స్థాయిని అభివృద్ధి చేయొచ్చు. In so many ways you have to serve the nation, serve the society and see that it comes up. Swami, nowadays youth love to eat animal meat. Isn't killing animal for eating himsa? How
does meat eating affect our spirituality? ఈనాడు ఎవరైనా సరే భగవద్భక్తులుగా కోరేటువంటి వారు, భగవద్భక్తులను విశ్వసించేటువంటి వారు, Today, let him anyone, those who consider themselves as devotees, మాంసభక్షణ వదలాలి. they should give up meat eating. కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఈ పశు మాంసము నీ పశుగుణములనే పెంచుతుంది. The meat will develop animal quality. హిందీలో చెప్తారు, జైసే అన్నే ఐసే మన్. As is the food, so is the mind. ఎలాంటి తిండో అలాంటి త్రేపు. As is the food, so is the belch. మామిడి పండు తింటే దోసకాయ తేపు వస్తుందా? When you eat mango, you don't have belch of cucumber. కనుక మేము ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి గుణంతో కూడినటువంటి క్రూర మృగముల యొక్క మాంసములను భుజించడం చేత మనలో కూడా ఆ క్రూరత్వం అభివృద్ధి అవుతుండాలి. When you partake the meat, you will have animal qualities more and more. ఇది ఒక్కటే కాదు. Not only this, కానీ పంచభూతములతో మనకు కనిపించి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలతో జీవించేటువంటి యొక్క ప్రాణం తీయటము ఎంత పాపము. what sort of a sin it is to kill an animal? నీ గుణములు రాక్షస గుణములు కావటమే కాకుండా నీ పంచభూతముల యొక్క సమానమైనటువంటి పరప్రాణిని కూడా నువ్వు తీయటం ఎంత పాపం. You have got the 5 elements in you to kill another animal with all the 5 elements. What a sin it is. మానవునికి తాపం ఏర్పడుతుంది. When you commit such a sin, you will have all the worry. కనుకనే నిజమైనటువంటి దైవ భక్తులు కాబోయేటువంటి వారు కావాలని ఆశించేటువంటి మాంసభక్షణ పూర్తి వదలాలి. Therefore, the true devotees should give up meat eating. మేము సాయి భక్తులము, రామ భక్తులము, కృష్ణ భక్తులము అనేది కోళ్ళు తింటూ కూర్చోవటం. They say we are Sai devotees, Rama devotees, but they eat chicken. వీడు డివోటీ ఎట్టవుతాడు? How can you be devotee? వీడు నిజమైన భక్తుడు ఎట్టవుతాడు? How can you be true devotee? కనుక వీడు కేవలం రాక్షసుడే. So you are a demon. అలాంటి వాడిని భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అనుగ్రహించడు. Swami, what is the meaning of Buddha and where did this word come from? Buddhi. Head represents intelligence. Not intelligence. Constant integrated awareness. It represents constant integrated awareness. Constant integrated awareness, head. Constant integrated awareness is head. Clear Sravanam is the ear. Clear listening is the ear. ఈ రెండు బుద్ధునికి చాలా ప్రధానమైనవి. These two are very important for Buddha. అందువల్లనే అందరికీ బుద్ధిని బోధిస్తూ వచ్చాడు. That is why he taught wisdom to one and all. కనుక he was referred to as Buddha. ఇంత పూర్వం బుద్ధు కాదు. Earlier he was not called Buddha. ఆ విధంగా బుద్ధిని బోధించడం చేతనే బుద్ధ అని పేరు వచ్చేసింది. Because he taught buddhi or wisdom, he is called Buddha. Dear Swami, we are doing all kinds of tapas. Still, why is our mind not peaceful? One small example is 2 wives இருக்கிற ரொம்ப கஷ்டம். தெரியுமா? தெரியாது. ஒரு wife இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது தெரியுமா? 2 wives என்ன ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ என்னன்னா மைண்ட் 5 wives அதுக்கோசம் ரொம்ப கஷ்டம். அவருக்கு எப்போ அசாந்தியா இருக்கு மைண்ட். எல்லாத்துக்கு அசாந்தி என்ன? ஒரு வைஃப் கிட்ட போன சப்தம் சம் டங்கு இந்த மாதிரி குருமா ஓடணும், இந்த மாதிரி சாம்பார் ஓடணும், இந்த மாதிரி பப்பு ஓடணும், இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஓடணும், அது இன்னும் டேஸ்ட் என்ன கேட்கும். கந்தம் அது வந்து இதுக்கு எல்லாம் சுகந்தமாக இருக்கணும், எல்லாம் அகரவச்சி ஓடணும், எல்லாம் நோட்டீஸ் எல்லாம் ஓடும், எல்லாம் ஸ்மெல்ல இந்த உணவு மாதிரி கேட்டுக்கொண்டிருக்கு. யாருக்கு என்ன வாங்கிட்டு வருது? மைண்டுக்கு ரொம்ப அசால்ட். அவர்கிட்ட போ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தா நீங்க கிட்ட பேசுற இல்லைன்னா பேச மாட்டேன்னு சொல்றேன். இங்க வாங்கிட்டு வந்தா எப்படி பாக்குறேன் என்ன பார்க்க மாட்டேன். நீங்க மியூசிக் அந்த மாதிரி சொல்றேன். இந்த வாங்கிட்டு வருமா இந்த 5 பேர் 5 டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் கேட்கும். இந்த சப்த ஸ்பேஸ் ரூபத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த மாதிரி இருக்கு.
Om Shri Sai Ram. We, Shri Satya Sai Young Messengers, Maharashtra, present a skit based on the message Ahimsa Paramo Dharma. Sai Ram brothers, let's begin our study circle for today. The topic being Ahimsa Paramo Dharma. Brothers, Swami says, love as thought is truth, love as action is right conduct, love as a feeling is peace, and love as understanding is Ahimsa, non-violence. So, if love is the undercurrent of all human values, then non-violence is the culmination, the zenith of all human values. When all values merge into one, that understanding of oneness and the basis of all creation leads to the human value of non-violence. Brothers, that means it is the understanding of oneness of all creation that nurtures the blossoming of non-violence in our thoughts, words, and deeds. It is the virtue of non-violence that gives meaning and purpose to our quest for human excellence, which is the ultimate purpose of human life. जब जब अहिंसा की बात होती है, भगवान महावीर की मूल शिक्षा अहिंसा परमो धर्म का हम सबको तुरंत स्मरण होता है। भगवान महावीर ने अपनी वाणी और अपने जीवन से इस मानवीय मूल्य को वह प्रतिष्ठा दिलाई कि अहिंसा और भगवान महावीर का दिव्य नाम ये दोनों पर्यायवाची बन गए। सभी दिव्य अवतारों ने, संत महापुरुषों ने अपने जीवन में अहिंसा को ही सर्वोपरि स्थान दिया है। अहिंसा का अगर हम सत्य रूप से अर्थ समझे तो वह यह होगा कि मन, वाणी तथा अपनी किन्हीं कर्मों से हम कभी भी किसी को कष्ट ना होने दें। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इस भावना के अनुसार हमें औरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए अपेक्षित करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जब भगवान महावीर ध्यानावस्था में लीन बैठे थे और गांव के कुछ लोग उनके दर्शन के लिए वहां एकत्रित हुए थे। भाई, आप कल ही इस गांव में आए हैं ना? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मन अत्यंत प्रसन्न और शांत है। बस आया हूँ, तब से भगवान की दिव्य वाणी सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। भाई, आप ही मुझे भगवान की कोई महिमा सुनाए। भगवान कहते हैं, सुखद या दुखद, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, अच्छे बुरे, किसी भी समय क्रोध, ग्लानि अथवा प्रतिकार किए बिना समभाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे भगवान के जीवन का आधार ही अहिंसा, प्रेम और करुणा है। जब घास फूस की कुटिया में भगवान ध्यानस्थ होकर अपनी साधना में लीन रहते, तब गौएं उनकी कुटिया के छाजन को चर कर नष्ट कर देती। गांव के लोग फिर उन गौओं पर लाठी बरसाते और यह देख भगवान का मन दुख जाता। तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपनी साधना से किसी को कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। एक बार एक क्रोधांध ग्वाले ने जब भगवान पर कोड़े फटकारे, तब स्वयं देवराज इंद्र ने उनके समीप रहकर उनकी रक्षा करने की अनुमति मांगी। तब भगवान मुस्काते हुए बोले, मुझे सुमन जितने प्रिय है उतने ही कंटक। मेरा कोई दुश्मन नहीं, सभी मेरे मित्र है। मुझे
किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं। भाई, वह चंड कौशिक की क्या कथा है? भगवान जब वाचाला ग्राम के निकट रहते थे, एक महाविषैले सर्प चंड कौशिक ने करुणा सागर भगवान महावीर के चरों के अंगूठे पर दंश दिया, परंतु वह निष्फल रहा। रक्त के स्थान पर भगवान के चरणों से दूध की धारा बहने लगी और उन्होंने उसे उपदेश दिया, हे चंड कौशिक, शांत हो जाओ और बोध ग्रहण करो। क्रोध की निद्रा से बाहर आओ और जाग जाओ। चंड कौशिक को अपने पूर्व जन्मों का अभिज्ञान हुआ और उसमें पश्चाताप जागा। ये क्रोध पर प्रेम की तथा भय पर निर्भीकता की विजय थी। किंतु भाई, इतनी कठोर पीड़ाएं सहकर भी भगवान का अहिंसा के प्रति संकल्प कैसे इतना दृढ़ होता चला गया? क्षमा मूर्ति भगवान, हमारा मार्गदर्शन करें। हर प्रकार की हिंसा से सर्वथा दूर रहो एवं प्रत्येक जीव मात्र के प्रति प्रेम, मैत्री तथा दया का भाव रखो। बात व्यष्टि की हो या समष्टि की, अहिंसा और प्रेम के व्यतिरिक्त इस सृष्टि के कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। अपने दैनिक जीवन में सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम तथा अहिंसा, इन मूल्यों का आचरण करो। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। देखा भाइयों, उस प्राचीन युग में ये उपदेश जितना उपयुक्त था, उससे कहीं ज़्यादा उसकी सार्थकता इस वर्तमान युग में है, जहाँ संपूर्ण प्राणी मात्र न जाने कितने प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित है। आज का विश्व हिंसा और भय से निरंतर त्रस्त है। ऐसे में भगवान महावीर का अहिंसा, मित्रता और समन्वय का मार्ग, यही हमारी सृष्टि को एक अटूट बंधन में बांधे रख सकता है। Kill not, cause no pain, for non-violence is the greatest religion, is what Lord Mahavir taught. Similarly, our beloved Swami, Bhagwan Shri Satya Sai Baba says, do not injure, abuse, oppress, enslave, insult, torment, torture, or kill any creature or living being. All souls are equal and alike and have similar nature and qualities. Anger begets more anger, and forgiveness and love lead to more love and compassion. True, love as understanding leads to non-violence. We have an obligation towards each other and to every object in the universe. And non-violence takes us on a voyage from I to we, making us realize that even though we are a speck in this vast cosmos, yet we are an inseparable part of God's creation. We are His creation, and we are also the guardians of His creation. The solution lies in transforming the self first, understanding and imbibing the virtue of ahimsa in the self first, and then inspiring others to follow the lead. Like Swami says, my life is my message, and now your life is my message. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Bhagwan Shri Satya Sai Baba, the Yuga Avatar, extolled and expounded the 5
human values and their importance in our lives. This is what Swami had to say about ahimsa, and I quote, "Ahimsa paramo dharma." Ahimsa is the most meritorious deed. Non-violence is an alternate name for truth and love. By following non-violence, one achieves love. To follow the path of non-violence, it is necessary to change the mental attitude. Nobody should be harmed by mind, body or speech. By purity of thought, word and deed, one should serve even one's enemies. Unquote. The father of our nation, Mahatma Gandhi, was also known as the apostle of ahimsa. He popularized this devotional song, Vaishnava Jantu, which was composed about 6 centuries ago by Narsi Mehta, a great devotee of Lord Vishnu, who expressed his devotion through poetry. Shri Satya Sai Young Messengers of Gujarat now presents the simple bhajan, which is verily the quintessence of teachings of all religions, for it describes the qualities of a true devotee and a true human being. The takeaway from this song holds true even in this century and will surely be relevant for all of mankind for years to come. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान लाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। A true Vaishnav is the one who feels the pain of others, helps those who are in misery, but never lets self-conceit enter his mind. Swami would often say, "Ego never goes," and he often warned us that spiritual ego is the worst type of ego. So let us rise above the petty thoughts of mine and thine and focus on the journey from I to we. सकड़ लोक मां सहुने वंदे। सकड़ लोक मां सहुने वंदे। निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। The one who respects everyone in the entire world, the one who does not criticize or belittle anyone,
and keeps his words, actions, and thoughts pure. The mother of such a soul is truly blessed. Swami gave us mantra of purity of the 3 H's, head, heart, and hand, and insisted that all our thoughts, words, and actions should always be in harmony. असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन न बजाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए. The one who develops equality of vision towards all, renounces all desires, respects other women as his own mother, never utter lies, and never touches the wealth of others is a true Vaishnav. Good and bad, pleasure and pain, everything must be faced with a sense of equanimity. All are one, be alike to everyone. वैष्णव जन तो तेने कहिए. The one who does not get attracted to worldly attachments, the one who develops firm detachment for the worldly and mundane things, who is enticed by the name of Lord Rama. All places of pilgrimage are embodied in him. According to Bhaj Govindam, only in good company one can develop detachment. Detachment makes one free of desires. Freedom from desires leads one to equanimity of mind, which leads to ultimate liberation. वडलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे. वडे नरसैयो तेनु दर्शन करता, वडे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुड़ही को तेरे तार्या रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ बराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने The one who forsakes greed and deceit and keeps away desire and anger. Narsi Mehta says, I would be grateful to meet such a soul. The very sight of such a virtuous person would liberate not only him but his entire lineage. Yes, that should be the goal of Sri Satya Sai Young Messengers, to be a true messenger of Sai, making our lives his message to spread love, peace, non-violence. We just have to be a true Vaishnav that Bhakt Narsi Mehta describes in this most beautiful and meaningful song. Jai Sai Ram. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं,
प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। With this final offering, the Sri Satya Sai Young Messengers from the states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Mumbai Metro region and Goa feel blessed and express their heartfelt gratitude for this humble offering. It was indeed a sublime chance to know God, abide in God and become one with God. And for all of us, this is the time to cherish peace, mercy, love and faith and unfurl the Prashanti flag in our own hearts, which will guide us to meditate on our inner reality and arise the flame of Bhagwan's divine vision. Thank you for joining us this evening. मोगाळ स्वामी, आम्ही गोंय राज्यांतल्यान तुमचे साई यंग मेसेंजर्स, तुमचे भक्त आणि तुमचीच बालविकास भुरगीं तुमकां जल्मदिसाची परबी भेटयतात. स्वामी, आमचो तुमचेर खूब मोग आसा. स्वामी, અમે ગુજરાતના સાઈ યંગ મેસેન્જર્સ આપના પરમ ભક્તો અને આપના બાળ વિકાસના બાળકો આપના જન્મદિવસે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. સ્વામી, અમે તમને ખૂબ ચાહીએ છીએ. प्रिय स्वामी, महाराष्ट्रातील तुमचे युवा मेसेंजर्स, तुमचे भक्त आणि तुमची बालविकासची मुलं यांच्याकडून तुम्हाला जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वामी, आम्ही तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. प्रिय स्वामी, हम आपके साई यंग मैसेंजर, आपके बाल विकास के छात्र एवं छात्रा, आपके भक्त, आपके जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश राज्य की ओर से आपको अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं. हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं स्वामी. हमारे प्यारे भगवान श्री सत्य साई बाबा, मुंबई मेट्रो रीजन से आपके सारे साई यंग मैसेंजर्स, आपके सारे भक्त और आपके सारे बाल विकास के बच्चों की तरफ से आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. हम सब की यही कोशिश रहेगी कि हम सब आपके सिखाए हुए उसूलों पर चले. आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे. हम सब आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं. माथा प्यारा स्वामी, मैं थाका साई यंग मैसेंजर, थाका बाल विकास रा बच्चा, अरे राजस्थान प्रदेश रा सगळा साई भक्त थाका जन्म दिवसरी इस शुभ अवसर पर ढेर सारो प्यार, बधाइयाँ और खूब शुभकामनाएं भेजा हाँ थे आन ग्रहण कर थाकी कृपा दृष्टि राजस्थान प्रदेश और साई परिवार माड़े बनाया रखो. थाको खूब प्यार. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे. भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे. शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते स्वामी, सर्वा प्राणपते. आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आवतान्धवा.
మాతా గురుదైవము మరి అంతయు నీవే స్వామి మరి అంతయు నీవే నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदायज्ञम् अहं भोजनं न भोजनं नैव भोज्यम् न सदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सदानन्दरूपं शिवो